Assalamu alaikum dear students, welcome back to another video. आज हम पाकिस्तान स्टडीज Tier 1 की इस फाइनल टर्म एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। इसके लेक्चर है हमारे पास लेक्चर 16 से लेकर लेक्चर 30। ये हमारे पास सिलेबस है फाइनल टर्म एग्जाम के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगी कि जो भी हमारे पास पेपर आता है वो ओनली सिर्फ और सिर्फ हैंड आउट से आता है। ये जो बाकी MCQs और हमारे पास फास्ट पेपर और ये सब दिए गए हैं इसमें से कुछ भी नहीं आता। और जो फाइनल टर्म एग्जाम है वो बहुत हमारे पास कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इससे ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949। The objective resolution was the first constitutional document that proved to be the foundation of the constitutional developments in Pakistan. It provided parameters and sublime principles to the legislators. It made the constitution-making process easy by setting some particular objectives before them that would be acceptable to the people of Pakistan would have suffered a lot under the Hindu-dominated majority. अच्छा, जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैंने वैसे रीड किया है ताकि आपको थोड़ी इसकी समझ आ जाए। द रेजोल्यूशन वॉज रिमूव्ड बाय लियाकत अली खान। जो करारदाद थी वो किसने रिमूव की थी? लियाकत अली खान ने। देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और लियाकत अली खान ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एंड अप्रूव्ड ऑन मार्च 1949, और जो कि अप्रूव्ड मार्च 1949 में। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1947-54। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द इलेक्शन वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। ओके, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग्स AIML claims AIML stand for All India Muslim League। ये हमारे पास आ सकता है पेपर में MCQs। The number of such members was 69। जो हमारे पास कितने members थे? हमारे पास 69। It increased to 79 after the 1977 when some states joined Pakistan and the increase in the population। There were two major parties। दो हमारे पास major parties थी कुछ टाइम। कौन कौन सी? Muslim League and Congress in the assembly at that time। This assembly had dual function to perform। Next, feature of the objectives resolution। ये आप फीचर्स खुद रीड कर लीजिएगा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुद इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन एंड इम्पोर्टेंस दी हुई है, ये भी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट, objections by non-Muslim। The major objection by non-Muslim was that the government was trying to mix the religion and politics that was against the spirit of democracy। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, ये भी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेक्चर 17 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। जो हमारे पास आईनी मसाइल पेश किए वो। Constitution is a set of basic principles and framework of governance and exercise of political power and legal authority। It clarifies the scope of power relationship among various institutions within the government and society। It has precedence over ordinary laws and cannot be changed like ordinary law। The Government of India Act 1935 was modified and promulgated in the newly state of Pakistan। The elected member in the 1946 election made the first constituent assembly and that faced grievous circumstances। उसको
जो हमारे पास सेलेक्ट हुए थे 1946 के इलेक्शन में, जो भी मेंबर हमारे पास सिलेक्ट हुए थे उनको संगीन हालात का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर इश्यूज हमें कौन कौन से फेस हुए। मेजर इश्यूज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फेस वर अबाउट फेडरलिज्म वफाकियत, रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी, सेपरेट एंड डिवाइन इलेक्टोरेट, अलहदा या मुश्तरका इंतखाबी हल्का। द नेक्स्ट लैंग्वेज इशू कौमी ज़बान का मसला, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लिमानी या सत्तार के निज़ाम, द इस्लामिक और सरपरस्त स्टेट, इस्लामी या सरपरस्त रियासत। ये जो मैंने यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन की है, इसका उर्दू में इसका मैंने ट्रांसलेट कर लिखा है, आपके हेल्प के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको आसानी हो लफ्ज़ को समझने में। नेक्स्ट देखते हैं हम फेडरलिज्म। There was a consequence of federalism, but yet there was many issues to be settled. The main was the Pakistan consisted of two territorial parts, East Pakistan with more population, less territory, but administratively one unit, and West Pakistan administratively four units. Administratively mean इंतज़ामी वो इंतज़ामी तौर पे हमारे पास वेस्ट पाकिस्तान में 4 यूनिट्स थे और जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान में 1 यूनिट था। फेडरलिज्म इज meant to amalgamate such kind of diversity, maintaining the unity of the state or country. Next, division of power. It was the most difficult question that how the power would be divided between center and the province. The heritage of British rule gave the tradition of a strong center, but the province were demanding more autonomy and provincial rights. Next, representation. The province of West Pakistan were also different in population and size. जो वेस्ट पाकिस्तान है उसकी population और size बिल्कुल ही different थी. All of them were sensitive to the representation and provincial autonomy. Next, ये हमारे पास एब्रीविएशंस आ गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली CA ने परफॉर्म किया था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, उसने बेसिक एक कमेटी बनाई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BCP ऑन मार्च 12, 1949। ये हमारे पास MCQs आ सकता है कि CA ने कौन सी कमेटी तश्कील की या ऐसे कौन सी कमेटी तश्कील की मार्च 12, 1949 में। ये भी आ सकता है आपको, उसका राइट आंसर होगा BCP। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CA ने फॉर्म की बेसिक प्रिंसिपल कमेटी BCP, आपको अगर डेट लिखने के लिए आएगी ऑप्शन में, तो ये आपने MCQs याद करना है, अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको अच्छे से हो जाए। यानी नेक्स्ट देखते हैं। First, BCP report. BCP Basic Principal Committee. This committee presented its first report on 28 September 1950. ये इन्होंने फर्स्ट रिपोर्ट कब पेश की थी? 28 सितंबर 1950 में। According to this report, 2 houses of the parliament were proposed. Okay. And the lower house was to be elected on the basis of population, and upper house was to be elected on the basis of full representation of all the province of Pakistan. इसमें हमारे पास तार है कि the lower house to be elected on the basis of population, वो बेस कर रहा था population पे, and upper house to be elected, वो elect कर रहा था किस पे? Equal representation of all the provinces of Pakistan, ठीक है? Namely East Bengal, West Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan. Equal power were proposed for the both houses. No mention of national languages was made. यहाँ पे हमारे पास national languages कोई भी हमें नहीं बताएंगे, ठीक है? मेंशन नहीं किए। नेक्स्ट है सेकंड BCP रिपोर्ट। BCP presented its final report on 22 दिसंबर 1952। देखिए अब हमारे पास ये इसका MCQ आ सकता है। ये फर्स्ट
BCP रिपोर्ट हमारे पास थी. This committee presented its first report on 28 September 1950. First report हमारे पास तब उन्होंने की थी present 28 September 1950 and the final report 22 December 1952. 1952 2 years के बाद. ये अपने डेट के बाद नहीं है. ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फर्स्ट बीसीपी कब हुआ था और सेकंड इन दोनों में से आपसे एक पूछ सकते हैं वो. नेक्स्ट, the principle of parties was not appreciated in both East Pakistan and Punjab. नेक्स्ट, मोहम्मद अली बुगोरा फार्मूला. ये अपने रीड कर लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद जब आप ये रीड करेंगे, इसका रिएक्शन ऑफ बुगोरा फार्मूला का ये था कि उर्दू एंड बंगाली बोथ एज नेशनल लैंग्वेज. उर्दू एंड बंगाली बोथ नेशनल, हमारी नेशनल लैंग्वेजेस होंगी. नेक्स्ट, 1 unit of West Pakistan, October 1955. 1 unit of West Pakistan was established on 14 October 1955. अच्छा, 1 unit of West Pakistan कब establish हुई थी हमारे पास? 14 October 1955. The provinces of Punjab, Sindh, NWFP and Balochistan would be amalgamated in 1 unit to establish party between the two parties of the country. Next, separate or joint electorate. Separate electorate was adopted on the demand of Muslims in 1909 by the British government. ईस्ट डिसाइड किया था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होने चाहिए. वेस्ट ने किया था कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट होनी चाहिए. लेकिन 1957 में ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज अडेप्टेड, जो कि हमारे पास ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्ट हो गए थे ऑल पाकिस्तान बाय द नेशनल असेंबली. ये हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि ईस्ट ने क्या कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो सकता है, वेस्ट ने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट. लेकिन 1957 में ज्वाइंट इलेक्टोरेट वाज अडॉप्ट हो गया था. 1957 एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट कब अडॉप्ट हुआ था, तो आप उसका करेक्ट आंसर होगा 1955. 1955. नेक्स्ट, द नेशनल लैंग्वेज इशू. Pre-independence Muslim LP all over India adopted Urdu. In 1948, Jinnah declared that Urdu would be a national language. मोहम्मद अली जिन्ना ने कब डिक्लेयर किया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है? 1948 में. अब किया था उन्होंने 1948 में उन्होंने किया था कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है. But province would use their languages. अच्छा, 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर किया था कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है. लेकिन वो प्रोविंस, जो जितने भी प्रोविंस है, वो अपनी ज़ुबानें इस्तेमाल कर सकते हैं. Opposition against Urdu was there in East Bengal. ईस्ट बंगाल ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की उर्दू ज़ुबान के लिए. This became most pronounced after the death of Jinnah of controversies on constitution making. Language movement started in East Pakistan February 1952. हमारे पास लैंग्वेज मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ईस्ट पाकिस्तान February 1952 में. नेक्स्ट टू लैंग्वेज फार्मूला वाज अडॉप्टेड इन 1952. टू लैंग्वेज फार्मूला हमारे पास अडॉप्ट हुआ था 1954. और ये आगे मैंने 1952 कह दिया, मिस्टेकनली हो गया. ये है 1954. In 1973 उर्दू वाज अडॉप्टेड एज नेशनल लैंग्वेज. इसलिए हमारे पास 1973 में हमारे पास उर्दू अडॉप्ट हुई नेशनल लैंग्वेज. यहाँ पे हम 1948 में जिन्ना ने कहा था कि उर्दू लैंग्वेज ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है. लेकिन बहुत सारी मुखालफतें हुई, फिर बहुत सारा हुआ. उसके बाद फिर हमारे पास 1973 में हमारे पास अडॉप्ट होगी कि उर्दू ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी, अलॉन्ग विद द सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन लैंग्वेजेस. नेक्स्ट,
parliamentary or presidential. The 1962 Constitution was a presidential constitution. There was a consequence of parliamentary system, but there was a limited demand for presidential system. बहुत सारे थे वो चाहते थे पार्लियामेंट सिस्टम हो, लेकिन थोड़े कम ही थे. लिमिटेड डिमांड थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए. Supporter of presidential system become dominant after the 1958 majority takeover. The 1962 Constitution was the presidential constitution. कौन सी होगी थी presidential constitution होगी थी 1962. Next, the Islamic or secular state. From the very beginning of Pakistan movement, there was an agreement that the state will have close relationship with Islam. Muslim defined their national identity with reference to Islam and its heritage. Some opposition came from the Congress member of the Constituent Assembly and a few circularities. There was a board agreement that the state will identify itself with Islam. The Constituent Assembly took time to define and the precise relationship between the state and Islam. Next, objectives resolution या read कर लीजिएगा एक बार. The issues to be addresses where ये भी आप read कर लीजिएगा. कौन-कौन से हमारे पास issue पेश आए. The key issue. The Constituent Assembly adopted a middle course and a modern perspective, spirit of Islam principles and value, modern notation of governance, representation and administration were eliminated. Next हमारे पास lecture number 18. Constitution making 1947-1956. The modified Government of India Act 1935 became the interim Constitution of Pakistan in 1947. Modified Government of India Act 1935 became the interim Constitution of Pakistan in 1947. The Constituent Assembly CA. Constituent Assembly CA was given the task forming the Constitution. The first meeting of CA was held on August 11, 1947 at Karachi. First meeting हमारे पास कब हुई थी CA की? August 11, 1947 at Karachi. Karachi में हुई थी August 11, 1947. The Basic Principal Committee, BCP, consisting of 24 members, was main work for the constitutional powers, the various subcommittees on federal and provincial power, financial regulatory and fundamental rights started working. Board of Talimat-e Islamiyya was also set up to seek advice on the religious matter. Next step, first BCP report 1950. ये भी आप लोगों ने रीड कर लेना है कि फर्स्ट बीसी रिपोर्ट 1950 में कौन-कौन से पॉइंट्स थे हमारे पास. इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी. नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म. ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप देख लीजिएगा खुद ही. एक दफ़ा मैं भी आपको रीड कर बता देती हूँ. दिस रिपोर्ट वाज severely criticized throughout the country. It would not satisfy both the wings, East and West. The religious group objected that the report contained nothing about Islamization. On the question of representation, the East Pakistan EP protested that their majority had been denied by the report. They marked that they were thrown into the parliament minority. The population of EP was slightly larger than that of West Pakistan WP. ये abbreviations है ईस्ट पाकिस्तान EP और वेस्ट पाकिस्तान WP. नेक्स्ट आप खुद ही देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड BCP रिपोर्ट 1952.
ये हमारे पास है कि head of state would be Muslim and no changes in power. Equal representation to East and West means UH upper house 60-60 or lower house 200 or 200. More power is were given to the lower house. Cabinet was made responsible to lower house. It was promised to make that make king would be a advance with Islam. No law would be made in violation of Islamic principles. Advisory board of 5 Islamic scholars was founded. ये हमारे पास है इतने मुश्किल नहीं है आप इधर कीजिए आपको समझ आ जाए Next criticism or third report Muhammad Ali formula October 1955. The proposal was revised in the light of the criticism and decided upper house equal representation of all 5 units. Lower house more representing to eastern part. So हम identify देते हैं. Okay. While in joint session, both wings have had equal representation. क्या वो join हुआ था तो हमारे पास equal representation आए थे मतलब कि अपर हाउस की हमारे पास थी 10 और वेस्ट पार्क की थी 40 लोअर हाउस में 165 थी और 135 थी तो हम जब इस पर ज्वाइंट सेशन करेंगे तो 175 दोनों की सेम हो जाएंगी decision by majority but it may include 30% member from each zone 30% member होंगे each zone में criticism it suggests some difficult process but mostly it was widely acceptable two languages Urdu and Bengali कौन सी हमारे पास languages थी two languages Urdu and Bengali were approved as official languages that injured the national unity as per the Azam was wished Urdu as national language था कि हमारे पास दो languages थी Urdu and Bengali were approved as official languages that injured the national unity as Qaid-e-Azam has wished Urdu as national language. This is important that after the formula the work began on constitutional drafting because the deadlock was over. ये dissolution in October 1954, G.G. Warner Journal dissolved the CA that the challenge in the Sindh court by Molvi Tamisuddin. The court declared the dissolution illegal, but the federal court upheld the G.G. action but asked for setting up an elected CK. Next, Second Constitution Assembly, July 1955. Ghulam Muhammad called a convention on May 10, 1955. Ghulam Muhammad called a convention on May 10, 1955. All its members were to be elected indirectly by the provincial assemblies. In this way, the second CA came into existence. Next, one unit scheme, October 1955. The presence of different provinces in WP had complicated the issue of WP representation in CA. It was handled by uniting all the WP units into one unit October 30, 1955. जो भी जितने भी यूनिट थे RWP यूनिट वो हो गए एक यूनिट में 1 unit October 30, 1955. Now both the parts had become 2 units and could be addressed equally. Constitution making. 1 unit scheme helped the task of constitution making was accomplished successfully. The previous committee's report
helped the new assembly that completed its works and presented in the second CA on January 1959. It with certain amendments was approved on January 1956, was enforced on March 23. If this Pakistan had become an Islamic Republic. चलें स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 19 देखते हैं. The 1956 Constitution. The Constitution of 1956 was passed after a long deliberation. It replaced the interim constitution. It was 234 articles and 6 schedules. It declared that the name of the country would be the Islamic Republic of Pakistan. There was clear impact of the Government of India Act 1935 and the Interim Constitution. इसमें वो कह रहे हैं कि 1956 का जो आइन था वो तवील गौर खसूस के बाद मंजूर हुआ. बहुत ज़्यादा हमने गौर फिक्र किया, फिर वो हमारे पास मंजूर हुआ. इसने अबूरी जगह ले ली. इसने इट रिप्लेस द इंट्रियम, मतलब कि अबूरी जगह ले ली इसने. इसमें 234 मज़हबीन और 6 शेड्यूल थे. इसने ऐलान किया कि मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मतलब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और अबूरी आइन पे वाज़ी असर पड़ा इस चीज़ को. वो आपको समझ आ रही होगी. अगर आपको समझ आ रही है प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. ये हम एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं ताकि आगे अच्छे मार्क्स आएँ और आप आगे जाके कुछ अच्छा रोल प्ले कर सकें अपनी लाइफ में. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स टीचर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम. Executive authority vested in the president who exercised it on the advice of the prime minister except in the matters he had discretion. A president had canonical function and exercise limited power. The president would be to 55 years of age. Muslim are unqualified to be member of National Assembly. He was to be elected by National Assembly and provincial assemblies. अब इसमें वो क्या कह रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो क्या कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी सदर के पास है जिसने इसके वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर इस्तेमाल किया. वाइन मामलात में जो इसके पास सुबाबियत थी, सदर के पास रस्मी अफ़आल थे और उन्होंने महदूद अख्तियारात का इस्तेमाल किया. नेक्स्ट वो कह रहा है कि सदर की उम्र 45 ईयर्स होनी चाहिए. मुस्लिम एंड क्वालिफाइड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली मेंबर बनने के लिए कितनी प्रेसिडेंट की उम्र होनी चाहिए? 45 ईयर्स ओल्ड. ये हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकता है. कितनी उम्र होनी चाहिए? 45 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए. होप आपको समझ आ रही होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर. He would be appointed by president. President could not remove him unless he was sure that PM did not enjoy the support of majority in the National Assembly. The president would be its sole judge, and he could ask PM to show his support. Cabinet was collectively responsible to NA. PM was the head of parliament assisted by cabinet. अब इसमें वो कह रहे हैं कि PM would be appointed by president. President who not approved and unless he was sure did not enjoy the support of the majority in the National Assembly. Next, one house parliament. National Assembly was the only house of parliament having a membership of 300 plus 10 women seats. कौमी असम्बली पार्लियामेंट का वाहिद ऐवान था जिसकी मेम्बरान की तादाद 300 प्लस थी और इसमें 10 जो हैं सीट्स वो वुमेन सीट थी. Principle of party was observed for representation. A method of direct election was adopted for general seats. All legislative powers were vested with a president could turn, reject or sign the bill. Okay.
वो कह रहे हैं कि ख़वातीन की नशिस्त नुमाइंदगी के लिए बराबरी के असूल को देखा गया है। जनरल नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात का तरीका इख्तियार किया गया। तमाम कानून साजी के इख्तियारात कौमी असम्बली के पास थे। ओके, अब इसमें इतना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, इसलिए आप ये पूरी देख लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। आपको होप समझ आ जाएगी, और समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है। Next, federal system. The Constitution provided three lists: federal, provincial, and concurrent. Uh, Provincial structure. At the provincial level, that was selected assembly, the parliamentary system under the nominal headship of governor. The real power were given to chief minister and his cabinet. Center had some overriding powers and some emergency powers too. They were clause 191, security or economic life was under threat for external or internal reason. वो हमारे पास क्लॉज 191 में क्या कह रहे हैं कि बैरूनी या अंदरूनी वजूहात की बिना पर इस सलामती या माशी जिंदगी खतरे में थी। और क्लॉज 193 में क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस इन प्रोविंसेस, वो में आईन कुरान आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट ज्यूडिक्रेसी। At central level, the highest court was Supreme Court. The high courts in provinces and subordinate courts were established. वो कह रहे हैं कि मरकज की सतह पर आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट थी। फिर सूबों में हाई कोर्ट्स और महतत अदालतें कायम हो गईं। Higher court have the power of interpretation of the constitution. They could hear the disputes between governments, and they were guidance of the legal right of the citizen. Fundamental rights, civil and political rights were given to the people of Pakistan, but they could be suspended in a case of emergency. Directive principles of state policy. These principles provided guidelines for policy making. Principles of objective resolution were included as permeable. The other principle included purity about Islamic practices, welfare of people, non-discrimination, and fulfillment of basic needs, etc. Next, number 7, Islamic character. The name of the country was the Islamic Republic. Objective resolution was the preamble. ये इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, आप खुद की पढ़ लीजिएगा। Working of the Constitution. No elections were held after the enforcement of election. It was finally abrogated on October 7, 1958. It worked from March 23, 1956 to October 7, 1958. Next, lecture number 20. The 1962 Constitution. Number 1, background, constitution making, silence features. Number 1, background. Military took over on 7 October 1958 and consequently Ayub Khan became chief martial law administrator. One major task was to frame a new constitution. वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर 1958 को फौज ने इक़्तिदार संभाला और इसके नतीजे में अयूब खान चीफ मार्शल बन गए। The administrator was critical of parliamentary system because it caused instability in the past. They sought stability of the nation in the gradual development of democracy. Next, constitution making. हुकूमत constitute make हुई, हुकूमत बनी. The government introduced basic democracies in October 1959. हुकूमत ने अक्टूबर 1959 में बुनियादी जमहूरियत मुतारफ कराई. Under this system, 40,000 basic democrats, local councillors were to be elected in each provinces.
इस निज़ाम के तहत हर सूबे में 40,000 बुनियादी डेमोक्रेट्स मकामी कौंसलर का इंतखाब होना था. They were to perform function as local government and their role of developmental work. They also acted as an electoral college for the election of president and the National Assembly. इसमें हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के तौर पर प्राइज इंजाम दिए हों और तरक्याती कामों में इनका किरदार वो भी सदर और कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए इंतखाबी कॉलेज के तौर पर काम किया. Next, election of the Basic Democracies BD. Basic Democracy BD was held in December 1959, कब हुई 1959 and January 1960. December 1959 and January 1960 में हुई, ठीक है. That. Then presidential referendum was held by the elected BD member on February 17, 1960. A constitutional commission was established in February 1960 under the chairmanship of Justice Shahabuddin, former Chief Justice, to examine the causes of failure of parliamentary system. Recommended a new system keeping in view genius of people, standard of education, internal condition of the country, need of development. Next step, Commission presented its report in May 1961. After then, 2 committees reviewed it. Under the report of these committees, the new constitution was drafted. Ayub announced the constitution on March 1, 1962. Election of the National Assembly NA and Provisional Assemblies PAS was held in April and May 1962 respectively. The new constitution was enforced on June 8, 1962. Material law was withdrawn. The new constitution consisted of 250 articles, 5 schedulers. Next, number 3, salient feature of the Constitution, title of the state, Republic and Islamic Republic, presidential system, a powerful president who was responsible for administration and affairs of the state. He should be a Muslim at least 40 years of age, should be a qualified to the member of NA. He would be elected through indirect election for a period of 5 years. If he had held office for more than 8 years, he could seek re-election with the approval of the NA and PS. Next, power of the President. President was the focal point of all the executive, legislative, and judicial powers. Cabinet was responsible to him. All key appointments were to be made by the President. He could issue ordinance. He could also declare state of emergency in the country. Next, number 3, National Assemblies, NA. NA was consisted of one house on the basis of principle of parties between 2 wings of the country. There were 150 seats plus 6 seats were reserved for women. Total सीट थी 150, जिसमें से हमारे पास 6 सीट थी वुमेन्स के लिए. All were elected indirectly. For the membership, minimum age limit was 25 years. Minimum age 20 years होनी चाहिए आपको इलेक्शन में खड़े होने के लिए. Legislative powers. NA had held all powers of law making, but law was to be finally ratified by the President. President could sign, reject, or return the bill. Financial power. Financial power of NA was limited. Only new expenditure would be voted.
NA could not reject consolidate funds list and recurring expenditure. Next, number 4, federalism. There were two provinces of the Federation, East, West and West Pakistan. East Pakistan and West Pakistan. Only one list of subjects, the central list, was given in the constitution. Next, provincial governments. Governor was head of the provinces and governor the province with his cabinet. Provincial government were directly under the control of president. There was a strong center with a powerful president. He had enough powers to manage provincial affairs. In case of emergency powers, central government could take direct control of the province. Next, 5 principles of policing. National solidarity would be absorbed. Interest of backward people would be looked after. Opportunities for participation in national life, education and well-being of people. Islam would be implemented in day-to-day life. Next, fundamental rights. Fundamental rights were provided in the Constitution. Political parties, originally political parties were not allowed. Sorry, यहाँ की थोड़ी मिस्टेक होगी. वो दरअसल ज़्यादा बोला नहीं जाता ना, अब मैं मुसलसल बोली जा रही हूँ. इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है. Next, Political Parties Act was introduced in 1962. नेक्स्ट इस्लामिक प्रोविंशन, ये आप देख लीजिएगा. एडवर्सी कौन सी हैं फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी. इसके 5 to 12 मेंबर्स होने चाहिए. इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड इन फोर्स फ्रॉम जून 8, 1962 to March 25, 1969. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं रखते नंबर 21. The 1973 Constitution. Previous lecture number 20 में हमने देखा था 1962 Constitution. अब हम देखते हैं 1973 Constitution. Number 1 background, number 2 Constitution making, number 3 features. अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ था 1973 Constitution में. Okay, background. Abrogations of the 1962 Constitution on March 25, 1969 lead to second material law in the country. 25 March 1969 को 1962 के आइन के मसलूही के नतीजे में मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ लगाया गया. Yahya Khan handed over power to Zulfikar Ali Bhutto on December 20, 1971 after the first general election. याह्या खान ने 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सौंप दिया. बट मटीरियल लॉ कंटिन्यूड एंड देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन मार्शल लॉ चलता रहा और कोई आइन नहीं था. नेशनल असेंबली अप्रूव्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इनफोर्स्ड ऑन अप्रैल 21, 1972. कौमी असम्बली ने अबूरी आइन की मंजूरी दी जो 21 अप्रैल 1972 को नाफिज किया गया. नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी comprising नेशनल असेंबली एंड members from all parties was set up in April 1972. तमाम जमातों के अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल आइनी कमेटी कायम कर दी गई. लॉ मिनिस्टर was the chairman of the committee. इस कमेटी के चेयरमैन थे. लॉ मिनिस्टर was chairman of this committee. All parties agreed on the future political system in 1972. The committee reported on December 31, 1972. अक्टूबर 1972 में तमाम जमातों ने मुस्तबिल के सियासी निज़ाम पर इत्तफाक किया और 13 दिसंबर 1972 तवील होरो
तवील गौरवफिक्र और समझौतों के बाद हतमी निज़ाम कायम किया गया. After long deliberation and compromises, finally draft was approved on amnesty on April 10, 1973. 10 अप्रैल 1973 को मुतफ़िका तौर पर नया आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया. कौन सा मुतफ़िका तौर पर 10 अप्रैल वो एक मुतफ़िका तौर पर नया आइन लाया गया और 14 अगस्त को नाफिज किया गया. The Constitution functioned since then with two gaps. It remained operational during following periods. 1973 to 77 जो operational था. 1977 to 1985 suspended. 1985 to 1999 operational after changes. 1999 to 2002 suspended. 2002 onwards operational after changes. Next, features of the Constitution. Parliamentary system. It was a parliamentary constitute having powerful Prime Minister PM as head of government with a very weak president. ये एक पार्लियामेंट्री आइन था जिसमें ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत के सरबराह थे. President must act on the advice of PM. सदर को वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर अमल करना चाहिए. All his orders were be countersigned by PM Minister to be elected by NA. PM exercised all exclusive authorities. PM was answerable to the NA. In 1985, power of the president were increased. President must be at age 45 years of age, Muslim qualified to become member of NA. He is elected by the parliament and the provincial assemblies for 5 years. Parliament with two houses, upper house called Senate. In this house, equal representation in given to provinces. Seats are reserved for the tribal areas, women and Rohanites. Its original strength was 63, which was later raised to 87 and then 100. Senate is elected indirectly. It is a permanent house as half of its members are elected after 3 years. Lower house, National Assembly is elected on population basis. Its original strength was 210, but now it is 342. NA is elected for 5 years. यह अपर केस और लोअर केस ये इनमें से एमसीक्यूज आ सकता है अपर केस और लोअर केस में से. ये अपने ध्यान से पढ़ना इम्पोर्टेंट है. ये पार्लियामेंट विद टू हाउसेस. Senate indirect elections, National Assembly direct election, voting age for the finance in lowered from 21 to 18. Parliament under 1973 Constitution is a powerful legislative body. It enjoys all legislative powers. It has control of the executive through questions, resolutions, parliamentary committees, etc. National Assembly is more powerful than the Senate. Budget is presented before any cabinet is answerable to National Assembly. Next, federal system. Federation of Pakistan has 4 provinces and a federally administrated area. 2 listed are given in the Constitution: federal list and concurrent list. Federal list and concurrent list. Provincial structure. Provincial governors are appointed by the president on the advice of PM elected. Chief Minister exercises exclusive powers. Permanently system in there in the provinces. Size of the provincial assemblies varies. In 2002, Punjab 371, Sindh 168, NWFP 124, Balochistan 65. Next, principles of policing. Number 8.
Islamic prevention are provided in principles of policy. For foreign policy principles are also given under these headings. Number two, fundamental rights. Fundamental rights are secured in the Constitution and are implemented through the highest court. Islamic provision. ये आप खुद रीड कीजिएगा इस्लामिक प्रोविजन इसके पॉइंट्स. नेशनल लैंग्वेज. उर्दू इज डिक्लेयर नेशनल लैंग्वेज. ये हम जब से हम लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर नंबर 16 से हम पढ़ते आ रहे हैं. ये इंग्लिश में भी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस और इंग्लिश हमारा यूज होगी ऑफिशियल पर्पस के लिए. Until arrangements were made, were it replaced by Urdu. Replacement by Urdu. Provincial Assembly may prescribe measures for teaching, promotion, and use of provincial languages in addition to the national language. National Security Council. National Security Council was added in 2002 in advisory capacity. Judiciary and independent judiciary is given under the Constitution. Supreme Court of Pakistan is the highest court. Supreme Court of Pakistan is the highest court. One court is established in each province and the one in Azad Kashmir. एक कोर्ट एस्टेब्लिश होगी हर प्रोविंस में और एक होगी आज़ाद कश्मीर में. A chain of lower coast, a chain of lower courts in their under their high courts.